Let's understand this chapter. Okay, probability. So the word probability means chances. How likely something is to happen. Okay, for example, when we toss a coin, we don't know whether it will be head or tail. So that uncertainty, उसी uncertainty को हम बोलते हैं probability. And probability से हम वो study करते हैं. Yes, Okay? sir. हाँ जी. अब देखो here see the word experiment. What is an experiment? An experiment is an action, is any action that gives a result. For example, you toss a coin. So tossing coin, this is an action. So throwing a die or drawing a card. So these all are actions. Okay. Means each gives an outcome. Outcome means whether it will come head or it will come tail. But Okay. so this is the outcome. Now, what is a random experiment? So random experiment means we know all possible outcomes. So but we don't know which one will happen. Suppose we toss a coin, we know head or tail will come, but we don't know exactly what will come. There is a 50-50% chances. Okay. Huh. This is known as a random experiment. Okay. Uh, See, examples are given. Tossing a coin. Outcomes are head or tail. Head and tail. Throwing a die. Outcomes are total six outcomes. One, two, three, four, five, six. So drawing a card, total 52 playing cards. So basically 52 outcomes. Okay. Understood? This is a random experiment. We are sure that one outcome will come, but we don't know what exactly it is. This new concept. Oh, okay, yeah. Trial is this. Trial. So what is a trial? I'll tell you in a simple definition that a trial means one complete performance of an experiment. Okay. Understood? A complete performance of an experiment. For example, if I am tossing a coin now. So if tossing a coin once is a one trial. Okay, one trial. Yes, sir. Tossing once. Tossing a coin twice is a second trial. Okay, Yes, sir. okay. I'm just changing now. So throwing a die once in a one trial is a one trial. If I'm throwing once means that's the one trial. If I'm throwing twice, that's another this is a second trial. Okay. Done now. It's a complete performance with done. Ah. Okay. And one more. Tossing two coins together once is also one trial. If I'm performing any act once, it's a one trial. It can be two coins, three coins, whatever it may be. Okay. Let me write. I said tossing a coin once. वो क्या होगा? One trial. One trial. Yes. Tossing a coin twice. Two That's trial. two trial. Yes. Now throwing a die is one trial. One trial. Okay. Throwing a die again double consider you can. This is the second trial, correct? Second trial. Yes. No. Now I'm just changing here writing tossing tossing sorry two coins together once. So Means twice. Two trials. what two coins I have and I'm together tossing first time na once. Right. So this is a One plus one one. one trial. So one trial. So I'm performing an action but performing at the first time only no. Okay. I have two coins I agree but I'm performing that action only So first time. so sir, what if they give simultaneously? So that would be one after one, Oh, another, right? हाँ simultaneous मतलब one after one means first trial done another second trial is they're performing. So there will be two, right? There will be two. But at the time they are performing, that means we'll consider one trial. Are you getting? Yes. So that's I written here. Tossing two coins together. I said this is your keyword together. One trial. Okay. So that was the concept. Trial means. Now, understand what is equally likely outcome. Okay. Now you see when all outcomes have the same chance of happening. You have coin which has head and tail.
It is 50% chances, it has 50% chances. Means both the outcomes have the same chance of happening. Similarly, in the die we have calculated now, Okay. all Yes, have 1/6, 1/6 chances. yes, sir. Means now come here in the on this concept, equally likely outcomes. When all outcomes have the same chances of happening, we call them equally likely outcome. As simple as it is. Okay. So equally likely outcome is both are these because both have same chances. All are okay now. So the essence is that so no outcome is more special. If you see, no outcome is more special. All have equal chances. Okay. Yeah. Now probability of an event. This is the formula basically. Number of favorable outcomes. Favorable outcome मतलब वही इवेंट जिसे आपने टॉयस कॉस करा है ना, टॉइन टॉस करा एंड आपका आया हेड, तो वो आप हेड का वन यहाँ पे रखोगे, ठीक है, Yes. एक ही हेड आया और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल भी तो आ सकता था, तो टोटल दो है तो दो नीचे रखोगे। सर और भी तो आ सकते हैं राइट आउटकम्स। नहीं अच्छा। नहीं एक ही नहीं, एक ही कॉइन है ना, एक कॉइन के तो हेड और टेल ही तो आ सकता है। हाँ एक ही आएगा। हाँ जी, चलो अभी आपके पास दो कॉइन्स है, तो मुझे बताना दो कॉइन में क्या क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। चलिए तो मैं पूछता हूँ बताना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग if we throw two coins together, what is the probability of getting two heads? टू हिट्स। हाँ, यहाँ पे है ना टू हेड्स, ओके या सो तो वन वन। एक ही है, इतने पूरे में तो एक ही दिया है, एक ही है ना हेड हेड, तो हाँ एक, तो टोटल आउटकम्स आर फोर, 1/4, दिस इज द आंसर। ओके Now लाइक I'm just changing, so you have thrown two toss, like you have tossed two coins, and what is the probability of getting uh, one tail? वन टेल वन अपॉन Only what is probability of getting only one tail? so 1/2 One upon two. yeah yes How? Please explain. because like टेल टेल्स है तो उधर इफ वी टेक लाइक वन हेड्स आएगा नहीं वेट टेल टेल्स छोड़ एक सेकेंड इफ वी टेक टेल्स एंड हेड्स so Hmm. probability of getting tails is 50 and probability of getting heads is 50 No, don't just you count that, no? like So I if, ask you what is the probability of getting only one tail? yes sir so one So upon out of two out of total four is there, total चार है ना बेटा? ठीक है हाँ oh okay out of चार only one okay so 1/4 वन अपॉन फोर कैसे, तो टेल तो इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो टोटल तो दो होनी चाहिए, 2/4 बोलना चाहिए आपको। आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन टेल, इसमें भी एक टेल है और निचले वाले में भी एक टेल है, तो yes टोटल दो हो गए ना, yes sir दो okay तो 2/4 बोलना चाहिए आपको। oh okay बाय द वे योर आंसर गेटिंग करेक्ट, वन हाँ बाय टू। लेट्स अंडरस्टैंड द concept event. Okay, okay yes sir. event. What is an event? So each outcome of an experiment is an event. I performed an experiment which is of this coin. I tossed, I got head. So this is an event. Again I tossed, I got tail. So this is another event. So I repeat. So each outcome of an experiment is called an event. Okay, now Okay, okay. got it, got it. Okay, now we learned events. These are the types of an event. We have sure events, and another we have impossible events, and let's understand each of these. So sure events means will definitely happen. This is a Okay, sure event. And what does it mean? Impossible events means will never happen. okay. Okay. Now let's understand for sure events, which is definitely going to happen. And example is, uh, if you throw a dice, you throw a die. When throwing a die, getting a number less than or equal to 6 is a sure event. Okay. Means I told you less than equal to 6 means we will not get a number which is more than 6. We will get number from 1 to 6 only. If you
throw a die. Correct na? Okay, got it. That's a sure event. So what is the example of impossible event? Now you change the getting a number, not this is getting number more than 6 when you throw a die. This is an impossible event because if you throw a die, you'll never get a 7. You'll never get a 12, 8, 9 something. Correct? Okay. It's an impossible event. Any real life example can you think in impossible event Um, जो हम डेली लाइफ में देरी करते हैं? डेली लाइफ में करते हैं ऐसा वाला कुछ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सी सन कहाँ से राइज करता है? इस से ना? Oh, okay, yes, yes. तो सन को वेस्ट से राइज कराओगे तो वो वाला क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है ना? Okay, गॉट इट? श्योर इवेंट क्या होगा? वी नो टुमारो इससे ही राइज करेगा सन. दैट्स द श्योर इवेंट. okay. गॉट इट? या तो इसलिए क्या करते हो ना, श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी कैसा लिखा जाता है? इज इक्वल टू 1. ओके, एंड इन इम्पॉसिबल इवेंट वी राइट इज इक्वल टू 0 ना. कभी भी ना प्रोबेबिलिटी इस दोनों के बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में. या 0 होगी या 1 होगी, इसके दोनों के बीच में ही लाई करेगी. 0 हो सकती है और 0 के अंदर कुछ भी हो सकती है, 1 तक, और 1 हो सकती है. इसके बाहर नहीं जाएगी. कभी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी या प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर नहीं होगी. हाँ हाँ, okay, 0 मीन्स व्हाट? इम्पॉसिबल. okay, okay, got it. 1 मीन्स श्योर. Okay, सो एनीथिंग इन बिटवीन मीन्स अनसर्टेन. इनके बीच में जो भी होगा उसको बोलेंगे अनसर्टेन. event, okay. Okay, so die is thrown once. Find the probability of getting an even number. Now, हाँ 6. तो probability अब die throw करते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6. They are asking an even number. So here 2 is even number, Let's do. 4 is even number, 6 is even number. Okay. So Yes, what are your total favorable outcomes? 3 na? 1, 2, 3. yes, sir. Right here, and total outcomes are right in the denominator 6. Okay, Okay. okay, got it. But if you simplify this, you'll get 1, 2. 1 by 2. So this is an even number probability. Now they ask you second, a multiple of 3. Okay. So here you see, let me change my color. Multiple of 3 is 3, 1 and 6. Correct? So your favorable outcomes are 2 only Yeah. among out of 6. Out of 6. So So this is what? 1 by 3. Correct? Now they are asking not a multiple of 3. So that was for first, that was ours for second. This is for third. We'll solve here. Not a multiple of 3 means here you see 1 is not multiple of 3 ना, है कि नहीं? एक को क्या करोगे? Sir, it is. हाँ मतलब पकड़ेंगे सब. हाँ नहीं नहीं, बच्चे वाले 2 को छोड़ के बाकी वाले सारे नॉन मल्टीपल ऑफ 3 होंगे ना. Yes, sir. तो 4 by 6. 6 which is 2 by 3. 2 by 3. Yes. See example 6. 2 coins are tossed together. Find the probability of getting no tail, two tail, exactly one tail. वही जो मैं पढ़ा रहा था आपको समझ में नहीं आया था, है ना? Yes. ऊपर सिखा रहा था वो, अभी यहाँ आ गया कंसेप्ट. अभी क्या करना है? 2 कॉइन्स टुगेदर टॉस किया तो आपको करना क्या है? अभी आप टोटल आउटकम्स लिखो, पॉसिबल आउटकम्स. तो 2 कॉइन्स आपने टॉस करा तो क्या क्या हो सकता है? एक तो है हेड, हेड आ सकता है. Tail. हेड टेल आ सकता है. Tail. टेल हेड आ सकता है एंड टेल टेल आ सकता है. तो टोटल कितने हैं? 4 है ना? सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 4. अभी इसको आपको निकालना है. यू हैव टू राइट नो टेल. नो टेल मींस, देखो नो टेल एक ही में दिख रहा होगा आपको, विच इज दिस. 1/4. बाकी सब में टेल टेल है कहीं ना कहीं. तो 1/4. Yes. 1, our favorable outcome is 1 and our total outcome is, we'll write in the denominator 1 by 4. Now next, 2 tails. जब 2 tails आनी चाहिए. So एक ही है जहाँ पे 2 tail है. Yes, sir. तो 1 by 4 again. अभी बोला exactly 1 tail. Exactly 1 tail मतलब देखो इसमें एक tail है exactly और इसमें भी एक tail है. 2 है ना ऐसी चीजें हमारे. 1/4. Yeah. तो 2 by 4. 1/2. 1/2. Are you getting now? Yes, sir. Yeah. So 1 by 2 will get them. So see example 7. A letter is chosen from the word triangle. What is the probability that is a vowel?
So vowels are A, E, I, O, I, A, E. So total 3. Okay. Among 3, total 3. और Yes. कितने में से टोटल कितने हैं ना वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बाई 8 हो गया। क्या टफ था? आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ। सर राइट का तो ये आएगा 5/15 which is equal to 1/3. 5 अपॉन टोटल कितने? 6 4 10 एंड 15। वेरी गुड। 1 1 upon अपॉन 3। not black का red plus white which is equal to 9/15 which is equal to uh 3/5. वंडरफुल, वेरी गुड। नेक्स्ट। रेड और ब्लैक का मेरे को समझा नहीं कि डू वी हैव टू लाइक व्हाट प्लस? हाँ हाँ, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर सर उन्होंने और क्यों लिखा है लाइक? हाँ, लाल भी आ सकता है और ब्लैक भी चलेगा। So we have to take either of them or both of them? यू नीड टू टेक बोथ ऑफ देम। Okay. So that would be 10/15 which is equal to 2/3. तो बाई 3 8 आ जाएगा। Oh, okay. तो 2 2 2 इंटू इंटू टू इज इक्वल टू 8। Okay. 8. चलिए सेकेंड। So Uh, probability of event A denotes the probability of getting an event A. Then probability of not getting A is sir, we have the P into A, right? हाँ, probability of getting A plus probability of not getting A, दोनों का मिला के कितना होता है? 1 होता है ना। Yes. तो किसका निकालना है? नॉट गेटिंग ए का निकालना है, इसका निकालना है। तो इसको इस साइड भेजो। तो क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, Oh, ये वाला ना। okay. Got. थर्ड वन। So the coin starts as 1, so head and tail, so 1/2. वेरी गुड। वन ऑन नहीं, आ ही गया आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। So wait, we can do this, right? So 2 into I'll I'll help. Head head, head tail, tail head, tail tail. Probability of getting at least one tail. so 1 At least one tail, here one, upon here 4. here one। अरे टोटल 3 में है यार। 3 में है क्या? वही वही मैं क्वेश्चन आपको पूछा था उस टाइम। तीनों में एक टेल है, एटलीस्ट बोला है ना, दिस इज एटलीस्ट। At least 1 tail. एक एक वो बोल रहा है कि वो एक तो होना चाहिए। Hmm. तो So, 3 में है आउट ऑफ 4। okay, so 3/4. A letter is chosen from the word pencil. What is the probability that the letter chosen is a consonant? So consonants मतलब क्या क्या है? ए भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, सी भी है, एल भी है। तो टोटल 4 ना। Yes. 4 आउट ऑफ कितने? 6 6 Yes. विच इज 2/3। Got it. इजी। Yes.